Hi students, welcome back. My name is Nikhil Kumar and welcome to another session on editorial analysis. So once again I've pulled out this editorial from the Hindu newspaper and it was published on 30th November 21, which is today itself. Okay, so what is this editorial all about? It is about cryptocurrency. I think the author is saying regulate it, control it, don't ban it. Cryptocurrency, as far as cryptocurrency is concerned, do not ban it, rather control it. All right, looks good, looks great so far. What you can do is, first of all, just go through this editorial very quickly, pause the video, go through it quickly, and then unpause it, and then collectively together we will go through the entire editorial in great depth and detail. All right, okay. Assuming that you are already through with the editorial, let me take you through it. So here we have, this is the heading which I had already discussed. It says regulation, not ban. Regulating means to control, okay, in a way. Cryptocurrencies. India should, so this is the subheading here. India should regulate trading of virtual currencies through monitored exchanges. Okay, so the author is trying to suggest something to the government, probably, yeah, that you should regulate trading of virtual currencies, the cryptocurrency, through monitored exchanges. And then in the heading we already know, don't ban it. Okay, so this is the first sentence we have. Let's go through it. Quite a long one, lengthy one. We will also understand how to break these sentences and to understand, because if the sentence is too lengthy, too long, it can pose some challenges, right? How to understand it. Let's have a look at it. It says 8 years after the RBI issued its first advisory cautioning means to take great care, because possibly there is some danger out. Okay, so be very careful, be very alert. Cautioning holders of virtual currencies about the potential financial and security risks, and 2 years after drafting a bill to ban cryptocurrencies. Now this is the sentence in blue. The government is set to introduce legislation to proscribe such currencies. So such currencies we have here, cryptocurrency we are talking about. And what is government all set to do? The government is set to introduce a legislation if it is passed. Supposing that it will pass, if it is passed, then it will officially proscribe. Now what does proscribe mean? Proscribe means to ban. Okay, proscribe means to ban here. All right, so this is the sentence. You can see the government is all, this is in fact I'm sure if you have done any grammar classes you would know this is your subject, this is your verb. The government is set to introduce legislation, and if it is passed, then it will ban such currencies. By such currencies we mean cryptocurrencies. Okay, so you can say that government is all set to ban the currency, the cryptocurrency. All of this, the first good 60-70% of this sentence is actually giving you more information about something. What is it? 8 years after the RBI issued its first advisory. So 8 years ago RBI had issued its first advisory. Okay, where in the advisory it was said that you holders of virtual currency, जो भी virtual currency खरीद रहा है, that you holders be careful, be alert. There's probably some danger out. About the potential financial and security risks. So आपको काफी फाइनेंशियल और सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है. तो आरबीआई ने 8 साल पहले ये एडवाइजरी इशू की थी. ये वन पार्ट है. And 2 years after drafting a bill to ban. So 2 years after drafting, उसके बाद you can say then what happened? A bill was drafted to ban cryptocurrency. So 8 साल बाद एडवाइजरी, 2 साल बाद बिल के ड्राफ्ट होने के बाद गवर्नमेंट नाउ इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन. तो बोल रहा है कि 8 साल पहले आरबीआई ने एडवाइजरी इशू की थी, 2 साल पहले बिल ड्राफ्ट हुआ, और आज क्या हो रहा है? द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन दैट वुड इफ पास्ड ऑफिशियली प्रोस्क्राइब सच करेंसीज. ओके, चलो, तो 2 साल पहले वैसे तो बिल ड्राफ्ट हो गया था, बैन करने की बात हो गई थी. आज एक तरह से गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेशन एज वेल. ओके, so far so good. Then what do we have next?
Now its concerns appear to be the risk associated with cryptocurrency. So government's concerns appear to be the risk. कुछ रिस्क हैं, किसके साथ रिस्क है? क्रिप्टो करेंसी के साथ रिस्क है. Let me find my pen. Here it is. So risk associated with cryptocurrency, including their potential use for money laundering एंड फाइनेंसिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज. तो गवर्नमेंट घबरा क्यों रही है भाई, क्यों इसे बैन करना चाहते हो आप? तो रीजन दिया है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है. क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? यहाँ पे मैंने दिया भी है. मनी लॉन्ड्रिंग इज इलीगली कोई पैसा आपने कमाया है, सो ऑब्वियसली इट इज नाउ ब्लैक मनी. सो नाउ यू विल वांट टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाइट एंड यू डू इट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, ताकि पकड़ जितना कॉम्प्लिकेटेड जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना पकड़ में नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. फाइनेंसिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई क्रिप्टो करेंसीज के साथ कुछ रिस्क हैं. क्या रिस्क है? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ब्लैक का वाइट होगा, और ये पैसा फिर इट कैन ऑल्सो फाइनेंस इलीगल एक्टिविटीज. यूजुअली क्रिमिनल्स are the ones who are involved in money laundering, isn't that so? The people who have got money from unfair or illegal means. तो ऐसे लोगों का पैसा अगर ब्लैक से व्हाइट हो रहा है तो ये पैसा बाद में यूज भी किस में होगा? इलीगल एक्टिविटी में ही होगा. ओके. The risk investors and consumers face in dealing with these so-called currencies, given that they are neither a store of value nor are they medium of exchange. आप इन्हें ना तो एक्सचेंज कर सकते हो, ना ही ये कोई जैसे आपका नोट है 100 रुपए का 500 रुपए का, उसकी वैल्यू है और जो रहेगी वैल्यू. इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, और आप किसी करेंसी से एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हो. And the ostensible means something that at the surface looks to be true, may not necessarily be true, but अभी तो सच लग रहा है. And the ostensible threat they pose to financial stability भी को भी प्रॉब्लम है. Are also key factors. क्या है key factors? One is risks investors and consumers face in dealing with these so-called currencies. क्या है? एक तो स्टोर किनकी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरा अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, एंड थर्ड इज थ्रेट दे पोज टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दीज आर दी की फैक्टर्स. Prime Minister Narendra Modi had in a video address on the Sydney Dialogue earlier this month said, तो ठीक है, एक वीडियो एड्रेस में उन्होंने बोला है मोदी जी ने, it is important that all democratic nations work together on this, which is cryptocurrency, and ensure it does not end up in wrong hands. तो हाँ, डर यही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी है, गलत हाथों में पड़ गई तो इसके काफी मिसयूज हो सकते हैं. ठीक है जी. ओके. The center and the RBI is deep disquiet. Disquiet is there's a feeling of worry and unease. घबराए हुए हैं, थोड़ा anxious हैं with cryptocurrencies in spite of something. Okay, so notwithstanding means in spite. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी दिया है, notwithstanding a brilliant defense means in spite of or despite the brilliant defense he was found guilty. तो अगर डिफेंस इतना ही अच्छा था तो गिल्टी फाउंड नहीं होना चाहिए. बावजूद इसके कि डिफेंस अच्छा था, he was found guilty, he was proven guilty, he was punished later on obviously. So not standing means in spite of. So in spite of RBI's worry, there has been an exponential jump in investment of virtual currencies. ठीक है भाई, सेंटर को थोड़ी चिंता है, आरबीआई को भी है. उसके बाद भी क्या हो रहा है, जब हम वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो बढ़ते जा रहा है, जंप कर रहा है. Especially after the Supreme Court last is struck down. Okay, what is struck down? Struck down means to cancel some law. Cancel an RBI notification. तो RBI notification को cancel किया था, और ये notification किसके बारे में थी? This notification was barring financial entities from facilitating. तो financial entities या bodies मान लो आप, फ्रॉम फैसिलिटेटिंग कस्टमर्स ट्रांजेक्शंस. तो आरबीआई नोटिफिकेशन ने फाइनेंशियल बॉडीज या फाइनेंशियल एंटिटीज को ये बोल दिया था दैट यू विल नॉट बी फैसिलिटेटिंग कस्टमर ट्रांजेक्शंस. कौन सी वाली ट्रांजेक्शन? विच आर रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज. तो बोल दिया था कि भाई लुक ऑल द फाइनेंशियल एंटिटीज, यू आर नॉट सपोज टू फैसिलिटेट any consumer transaction which is related to virtual currency.
सो दिस वाज द नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हटा दिया, ठीक है जी, इसे खारिज कर दिया। तो क्या हुआ, तो हाँ भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका वर्चुअल करेंसीज में, इट शोड जंप, एक्सपोनेंशियल जंप। Makes sense. I don't think there's any doubt so far. So I think the editorial is going good so far. Anyway, industry estimates now peg means this is the value they have set now, that they estimate currency holdings in India at about 40,000 crore. I mean, that's a huge amount held by about 15 million investors, and advertising trends. तो आप देख ही रहोगे आजकल एडवर्टाइजमेंट्स इतने आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स शो एन अपसर्ज राइज इन एड्स प्रोमोटिंग ब्रांड एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल करेंसीज। तो एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं कि हाँ भैया करो करो, बहुत अच्छी चीज है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप किस में करना है? क्रिप्टो करेंसी में। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द ग्राउंड हैज शिफ्टेड सिंस एन इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी। तो कोई इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी हुई होगी, इस एडिटोरियल में इतना उसके बारे में नहीं बताया गया, बट है, ठीक है। सेटअप टू स्टडी द इश्यूज रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज। सो दिस कमिटी, व्हाई वाज इट सेटअप? इट वाज सेटअप कि भाई आप स्टडी करो, क्या स्टडी करो? स्टडी द इश्यूज रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसीज। तो उसने क्या किया? उसने स्टडी किया होगा कमिटी ने। आफ्टर स्टडिंग फर्स्ट प्रपोज द बैन। भैया कमिटी ने क्या बोला? बैन कर दो। इज बियॉन्ड डाउट। तो बोल रहा है ये जो ग्राउंड था ना, ये शिफ्ट हो गया। अभी ग्राउंड कौन सा? ग्राउंड ये है 2019 में, 2019 में ये वर्चुअल करेंसी को बैन करने की बात हुई थी। नाउ दैट ग्राउंड हैज शिफ्टेड, मतलब अब बैन करने की जरूरत नहीं है। 2019 में माना, वी एक्सेप्ट इट, वी अंडरस्टैंड दैट दिस कमिटी हैड प्रपोज्ड, बट नाउ द ग्राउंड हैज शिफ्टेड फ्रॉम द एम्फैटिक एजर्शन, बहुत ही मतलब एम्फेसिस ले करके, काफी अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ले करके, इन दैट पैनल्स रिपोर्ट दैट नो कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रीट्स वर्चुअल करेंसीज एज लीगल टेंडर। तो क्या बोला था कमिटी ने? कोई और कंट्री तो नहीं मान रही लीगल, तो बैन करो ना। ओके, प्रोबेबली द ऑथर इज नाउ ट्राइंग टू से वो ग्राउंड शिफ्ट हो गया, शायद बाकी कंट्रीज अब मानने लग गई हैं लीगल इसको। टू अ सिचुएशन, वही हुआ। सो अर्लियर द सिचुएशन वाज no country would consider these currencies legal, to a situation where earlier this year El Salvador is a country, officially declared, ये हम बाद में पढ़ेंगे, officially declared Bitcoin as legal tender. Much has changed in the adoption of private virtual currencies worldwide. ये एल सेल्वाडोर के बारे में कुछ बताया गया है कि ये कंट्री है, नेशन है, अगर नहीं पता तो। एंड एडमिटेडली अ स्मॉल एंड छोटी कंट्री है, काफी हेविली इंडेप्टेड कंट्री है। तो अगर आपको जानना है एल सेल्वाडोर के बारे में तो ये पढ़ो, नहीं तो ये हम आगे बढ़ेंगे। एल्विस, तो बात ये है कि भाई जब ये कमिटी ने बोला 2019 में दैट यू बैन इट, उस टाइम चीज अलग थी, उस टाइम कोई कंट्री लीगल नहीं मानती थी, बट नाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। द पैंडेमिक, फ्यू मोर पॉइंट्स फॉर यू। द पैंडेमिक हैज एक्सेंचुएटेड, एम्फसाइज्ड द ग्लोबल एम्ब्रेस, एक्सेप्टिंग और इंक्लूडिंग विद ओपन आर्म्स। क्या चीज आपने अपना लिया है? ऑफ ऑल थिंग्स डिजिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो बोल रहे कि पैंडेमिक के बाद हाँ ये डिजिटाइजेशन भी बढ़ा ही है, ठीक है, और ये डिजिटल और डिजिटल थिंग्स को एक्सेप्ट किया गया, चाहे डिजिटल इन्वेस्टमेंट ही हो, टेक्नोलॉजीज हो, इनेबलिंग क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन अपीयर टू बी नो डिफरेंट। तो बोला जब सारी ही टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट की गई हैं और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन कोई उसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। सो ही इज सेइंग दो चीजें चेंज हो गई हैं अभी तक इस पैराग्राफ में। One, earlier we understand no country would consider it legal, but now that is not the case. Secondly, after pandemic, you see that the public, the country, the people are accepting these with open arms. Blockchain क्या है? Blockchain is actually, you can say, is a technology which is used in cryptocurrency. It is said to be very, I mean, highly secure technology. Okay, तो बोल रहा है cryptocurrency और blockchain में क्या फर्क है? जब सारी ही डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट की तरफ पेंडेमिक के दौरान इन सब का थोड़ा जंप हुआ है, इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, तो ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक द एग्जांपल्स कंटिन्यू।
after El Salvador, we have Canada, Japan, Thailand permit the use of virtual currencies as a payment method, with some jurisdiction regulating them as a digital asset and others as a commodity. ठीक है, कुछ jurisdiction regulations हैं, but उसके बाद भी these three countries have allowed virtual currencies to be used as a payment method and also as a and others as a commodity. ठीक है. Canada and the US closely monitor virtual currency activity to ensure that they do not run afoul of, means they do not go against laws on financial crimes, with the former also earning tax revenue on. अच्छा जी, तो कनाडा तो टैक्स रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है इस पे, और आप बैन करने की बात कर रहे हैं. तो ये एग्जांपल्स कंटिन्यू हो रहे हैं. एल सल्वाडोर की बात हुई, फिर पैंडेमिक की बात हुई, फिर बोल रहे कनाडा, जापान, थाईलैंड को देखो ना, उन्होंने भी कुछ हद तक मान ही लिया है. ठीक है, कुछ आपका ये जुरिस्डिक्शंस रेगुलेशंस हैं, बट उनको ध्यान में रखते हुए माना गया है. और कनाडा एंड यूएस आर आल्सो वर्किंग ऑन सिमिलर लाइंस. इनफैक्ट कनाडा इज आल्सो अर्निंग रेवेन्यू ऑन ट्रांजैक्शंस. All things given, India should avoid, eschew means avoid, the temptation to join China. बोल रहे कि आप चाइना के साथ मत जाओ. Just because China is banning virtual currencies does not mean you also do the same. And instead aim to tightly regulate. हाँ, आप बिल्कुल आंख बंद मत करो, रेगुलेट करो, रूल्स बनाओ, लॉज बनाओ, प्रोविजंस बनाओ, कंट्रोल करो इन चीज़ों को, बट बैन मत करो. दे ट्रेडिंग थ्रू मॉनिटर्ड एक्सचेंजेस एंड अर्न रेवेन्यू. तो आप रेगुलेट करो और क्या करो, आप अर्न करो. ओके, इंस्टेड ऑफ बैनिंग इट. सो द ऑथर इज एक्चुअली suggesting what the government should do or the RBI should do. Simultaneously, it should expedite the RBI's pilot of the Central Bank of Digital Currency so as to offer an alternative to cryptocurrencies. So I think there's already a plan by RBI's Central Bank of Digital Currency. So we already have a plan which is I think trying to come up with an alternative to cryptocurrency कि अपना खुद का ही कुछ सेटअप बनाना है. एंड सो द ऑथर इज ट्राइंग टू से उस प्रोसेस को फास्ट कीजिए, उस प्रोसेस को स्पीड अप कीजिए, एक्सपेडाइट कीजिए. So what is the overall the author is trying to say in this editorial, that do not ban cryptocurrency, rather try to control it, regulate it, make rules for it, make laws for it, but yes, let it be here. All right, and not stop here, rather try to earn money from it, try to earn revenue, tax revenue from it as well. I think that's it. That sums up the entire editorial. If you have any doubts, any questions, feel free to post your comments in the comment section. Also, you can get in touch with me on this number, or you can even send me your mails here on this email ID. If you want any more information on cryptocurrency, feel free to get in touch. All right, ठीक है जी. Keep studying, keep practicing, keep working hard. All the best. Take care. Goodbye.